हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल मास्टर डॉक्टर डी के सिन्हा। आज हम लोग फंजाई के टाइप्स और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। इन प्रीवियस वीडियो तुम लोग को मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया था, साथ ही क्लासिफिकेशन में बताया गया था। किंगडम फंजाई is divided into mainly 4 classes. First, Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. Phycomycetes again divided into 2 parts, 2 classes, according to some book, that are Oomycetes and Zygomycetes. Oomycetes is called oogamous fungi, in which sexual reproduction occurs by oogamous process. On the basis of types of gamete that participates in fusion, gamete is of 3 types: isogamy, anisogamy, and oogamy. Okay. Zygomycetes is also called conjugation fungi, in which sexual reproduction occurs by formation of conjugating tube. Okay, so now we know first Phycomycetes. Phycomycetes is also called lower fungi or algal fungi. Because it resembles as algae. Phycomycetes mainly aquatic and also found in moist area. Also found in moist area. In mainly moist wood or other places. Generally, some are saprophyte or parasitic. Mycelium is aseptate. Mycelium is aseptate. Septa absent. Partition wall is not present. And due to absence of septa or partition wall, mycelium or hyphae is cynocytic. Mycelium is aseptate, hyphae cynocytic, and branch. Okay, mycelium cynocytic and branch due to absence of septa. Due to absence of septa. Sexual reproduction occurs by asexual reproduction occurs by formation of spores. Means asexual reproduction by zoospore. Zoospore is motile spore, and a planospore. A planospore is non-motile spore, or with the help of conidia. So asexual reproduction occurs by formation of
जूस्पोर, एप्लानोस्पोर और कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन by गैमीटेंजियल contact और गैमीटेंजियल copulation। You know, sexual reproduction completes in 3 stages: plasmogamy, karyogamy and meiosis. So these 3 stages also completes in phaeomycetes, and gametangial contact and gametangial copulation are the method by which two gametangia come contact in each other and fuse together. Okay. Phaeomycetes is divided into 2 classes: oomycetes and zygomycetes. Oomycetes and zygomycetes asexual by zoospore or conidia. Zoospore is motile spore. In zygomycetes asexual by aplanospore. Aplanospore is non-motile spore. Sexual gametangial copulation in oomycetes. In zygomycetes, 1 minute. Oomycetes gametangial contact, and in zygomycetes gametangial copulation. Gamy is oogamous in all member. In zygomycetes isogamous in all member. Okay. Example of oomycetes: Phytophthora, infestans, albugo, candida, Phytophthora infestans, albugo, candida. These are parasitic fungi. Phytophthora infestans cause late blight disease in potato. It causes late blight disease
in potato, while albugo candida cause rust disease in crucifery या क्रूसीफर. Phytophthora infestans, late blight disease in potato, albugo candida, white rust disease in crucifer. Crucifer means mustard family. Okay, and the example of Zygomycetes, Pilobolus, Rhizopus, Mucor, etc. Generally, Pilobolus, Rhizopus, Mucor, all are saprophytic, depends upon dead decay organic materials. Pilobolus also called fungal shotgun, due to nature of dehiscence of sporangia. Sporangia is a sac-like structure in which spores are developed, and sporangia breaks down with jerk, so it is also called fungal shotgun. Rhizopus, also called pink bread mold, and Mucor is called dung mold. पिंक ब्रेड मोल्ड और सिंपली ब्रेड मोल्ड, अगर ब्रेड को थोड़ा सा मॉइस्ट करके कहीं कुछ समय तक छोड़ दें तो उसके ऊपर कुछ व्हाइट कलर का, पिंक कलर का फंगल डेवलप हो जाता है, वह राइजोपस है. उसी तरह से म्यूकर इज कॉल्ड डंग मोल्ड. इट मीन्स इट डेवलप्स ऑन fecal materials of different animals, not for cow or buffalo. It develops on fecal materials of different types of animals. Next class of fungi is Ascomycetes. Ascomycetes, also called sac fungi, cup sac. Generally, in Ascomycetes, ascospore develops, and ascospore develops in a sac-like structure called ascus. So, due to presence of ascus or ascospore, it is called Ascomycetes. It is called Ascomycetes. Mycelium is septate and branched. Mycelium is septate, septa present, mostly are multicellular, but some are unicellular. Example of unicellular, yeast. So yeast is the member of Ascomycetes. yeast किसका मेंबर है, याद रखना है. yeast किसका मेंबर है, तो Ascomycetes का मेंबर है. ठीक है.
सैप्रोफाइट, पैरासाइट और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मीन्स डिपेंड्स अपॉन dung, means animals fecal, depends upon dung means animal fecal. Asexual by conidia, asexual by conidia, unicellular ascomycetes, yeast reproduces by budding, also called torulation, budding or torulation. Sexual reproduction by somatogamy, karyogamy and meiosis. सोमैटोगैमी और प्लाज्मोगैमी, in which fusion of two cell takes place. जनरली सोमैटोगैमी से ज्यादा अच्छा होगा प्लाज्मोगैमी यूज करें, बिकॉज इट इज a stage of sexual reproduction and in this process gametangia participates. Now see, sexual reproduction, fusion of two cell occurs by somatogamy or gametangial contact. These are two mycelium. You know mycelium is septate, means uninucleated mycelium comes in contact to each other, this like. In this stage, these two cells fuse together. Process is called plasmogamy, means fusion of cytoplasm is called plasmogamy, and in this stage is called dikaryon. Dikaryon, also called dikaryophase, also called dikaryophase. Now next stage, a sac-like structure is formed. Sac-like structure is called ascus. It develops in which पहले ए न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, दोनों न्यूक्लियस जो था डाइकैरियन फेज था, वो दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ. प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोगैमी. कैरियोगैमी एंड आफ्टर दैट in ascus 4 to 8, these are ascospore. These spores are called ascospore. Sac-like structure is called ascus.
and in Ascus 4 to 8 ascospores are developed. Minimum 4, maximum 8. Okay. This whole structure is called ascocarp or fruiting body. Ascocarp or fruiting body. Inside the ascocarp, ascus is present. Inside the ascus, ascospore present. These ascospore germinates and forms new mycelium. Okay, so this is the method of sexual reproduction in Ascomycetes. Now example. Now see example of Ascomycetes. First, Penicillium. There are two species, Penicillium notatum. First of all, penicillin antibiotic was obtained by Alexander Fleming from Penicillium notatum, and for this Alexander Fleming was awarded by Nobel Prize. But in nowadays penicillin is obtained from Penicillium chrysogenum. पहले सबसे पहला पेनिसिलिन निकला था पेनिसिलियम नोटाटम से, लेकिन अभी जो निकाला जा रहा है वह निकाला जा रहा है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से. ओके, पेनिसिलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू और ग्रीन मोल्ड. ऑल्सो कॉल्ड ब्लू और ग्रीन मोल्ड. Second example of Ascomycetes is Aspergillus. Second example of Ascomycetes is Aspergillus, also called black or brown mold. Black or brown mold. There are different species of Aspergillus, such as Aspergillus niger, used in laboratory for production of citric acid. First, Aspergillus niger used in lab in production of citric acid. Next, Aspergillus fumigatus. Generally, Aspergillus fumigatus cause diseases in cattle. Cause diseases in cattle and human, and disease is called aspergillosis. Next is Aspergillus flavus. Next example is Aspergillus flavus. It develops in canned food. जो भी बंद फूड है
अगर उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वैसे कैंड फूड में एस्परजिलस फ्लेवस डेवलप करता है एंड एस्परजिलस फ्लेवस प्रोड्यूस ए टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड एफ्लाटॉक्सिन। एस्परजिलस फ्लेवस प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस called aflatoxin and aflatoxin is carcinogenic in nature. It means it causes cancer. खास करके अगर हम ग्राउंड नट की बात करें, रेनी सीजन में ग्राउंड नट के अंदर ब्लैक कलर का कुछ स्पॉट मिलता है या कुछ ग्राउंड नट ब्लैक कलर का हो जाता है, उसका टेस्ट भी काफी खराब लगता है। तो उसमें एस्परजिलस है और वह एस्परजिलस एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस किया है जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफी डेंजरस है, वह कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज क्लेविसेप्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्लेविसेप्स। थर्ड एग्जांपल क्लेविसेप्स, पूरा नाम क्लेविसेप्स परप्यूरिया, पूरा नाम क्लेविसेप्स। नेक्स्ट क्लेविसेप्स परप्यूरिया एंड क्लेविसेप्स परप्यूरिया काउज ergotism disease in bajra from Claviceps purpurea. A chemical ergotine is also obtained from Claviceps purpurea. Ergotine obtained from Claviceps. It is a drug. Another drug, LSD, lysergic acid diethylamide. It is hallucinogenic drugs. hallucinogenic drugs मतलब भ्रम पैदा करने वाला ड्रग्स। बहुत सारे लोग जैसे इसका कैनाबिस सैटिवा की बात करें, भांग की बात करें, वह भी हैलुसिनोजेनिक नेचर का है। तो उसी तरह का यह भी है एलएसडी ड्रग्स जो कि क्लेविसेप्स परप्यूरिया से निकाला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज न्यूरोस्पोरा क्रासा। नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ नंबर, न्यूरोस्पोरा क्रासा। It is used in genetical experiment. एक साइंटिस्ट थे बीडल एंड टॉटम proposed one gene one enzyme hypothesis. Beadle and Tottle proposed one gene one enzyme hypothesis on the experiment on the Neurospora crassa. So Neurospora crassa is also called Drosophila of the plant kingdom. Means प्लांट के लिए अगर कोई जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट करना होता है तो वह न्यूरोस्पोरा पर किया जाता है। एनिमल के लिए अगर किसी
का एक्सपेरिमेंट करना होता है तो ड्रोसोफिला पर किया जाता है। ड्रोसोफिला इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट फ्लाई। तो एनिमल के लिए ड्रोसोफिला, और वैसा ही कैरेक्टर उसी के रूप में इसका यूज हो रहा है, इसलिए ऑल्सो कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट kingdom. Okay, and one more example of Ascomycetes is truffle. Fifth, truffle. It is edible Ascomycetes. ट्रफल इज edible Ascomycetes. ओके, तो हम लोगों ने आज फंजाई का दो ग्रुप फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के बारे में जाना। फाइकोमाइसिटीज का ही दो पार्ट, ओमाइसिटीज एंड जैगोमाइसिटीज। नेक्स्ट दो ग्रुप बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स।